Good morning, students. Is it audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, only 45 students are joined. 46, 47. What about other students? Just to wait for 1 minute to 1 or 2 minutes. Let us join all of. So meanwhile, we discuss previous practical assignment topics. So previously we started assignment 1, which contains administrative commands. I think all of you practiced this administrative commands. Still, if anybody have difficult to execute the commands, if you not understand any concept or if you want to know about the command, you just ask me right now just for a few minutes. Let us join the remaining students. Until then, we will discuss some doubts if you have any. Anybody have the doubts regarding to the practicals or executing the commands or command का क्या काम करता है क्या? If you want, you just ask just for few minutes, or you can text on the chat box so that I will discuss. So basically, in the previous lecture, first lecture means for the practical point of view, uh, I started how to install the MySQL, and after that we seen that some basic commands, administrative commands, how to create a user, how to delete a user, how to modify the password. Okay, I think password it is not practiced. Okay, I think password भी change किया हमने. Next, we discussed creating the database and deleting the database, and how to see the list of databases are in the data. Like this, we seen some related assignments one, and the previous lecture also we discussed the same thing, and we extended to that creating a table, how to create a table in the database, and also we seen that different SQL languages, how what are the different SQL languages are there. So we have totally 5 languages are there. We discussed this the previous class. 5 languages like DDL, data definition language, and also we seen that DML, what is DML and what is TCL, DCL, and query processing language. Okay, data query DQL, data query language DQL. So like this we discussed in the previous, and also we seen that how to create a table. Okay, so in this class now we start how to create a table, and along that we see some data types. What are the different data types are there, and what is data types are it contains. We see that data types, because the data types are very important, because if you want to create any wait if you want to create any variable, so definitely you have to know the data types first. Okay, so that's why we see that the data types, if you see that assignment 1,
I think in the assignment 1 it is given. Minute, I want to open this assignment 1 so that everybody can understand the list of assignments. Just wait, PDF it is opening. Basically, suppose if you want to create a table, अगर suppose मैंने एक table create करना है, so टेबल कैसे क्रिएट करना पड़ता है? टेबल को एक नेम देना पड़ता है, टेबल को कॉलम्स रहता है, कॉलम को डेटा टाइप्स रहता है. So like this, suppose if you want to define any table, definitely it requires some set of attributes or set of columns you need to create. So but how that attributes are going to create? So each attribute, generally if each attribute, it contains two main important parameters. First parameter is the name of the attribute. Attribute is nothing but column name, column. Okay, so just to remember this always. Okay, because column is general term, we have to use always the technical terms. Okay, so technically the column name we call it as a attribute. So any attribute, if you take any attribute, it contains totally two main parameters. Okay, so what is the two main parameters? First one is the name of that attribute, and the second is data type. Okay, yes, these are the different data types available. Okay, so name of the attribute and data types. So without data type, we cannot able to create the attribute, because attribute data type, it defines attribute to data type, it defines the domain of that particular attribute. It defines the which domain it belongs to. Suppose if I am created a integer data type, so that attribute defines that it is belongs to the integer category. Okay. Similarly, suppose if I created this attribute by using the varchar data type. Varchar data type, it is also belongs to the same. Okay, so that particular category. Like this, if you want to create a attribute, compulsory, we have to first define its domain. Without domain, we cannot allow the attributes to create. Okay, अगर एक attribute create करना है, तो compulsory इसको एक domain assign करना पड़ता है. Without domain, there is no existing variable. Table create होता है नहीं. Okay, without data type. Okay, that's the data type importance. So now if you want to create a data type, so here, so attribute, if you want to create a attribute, these are the different data types we can use for assigning the domain to the particular attribute. एक attribute को अगर कुछ domain assign करना है, तो उसके लिए ये list of domains है. Okay, so first domain, here domain is nothing but a data type. Okay, so first data type है character. You see that character, and in bracket, okay, we have to specify the length. So character means it is a fixed characters. Okay, it will takes only one character. Okay, length bytes, only one length byte it requires. Okay, so the character is a one data type. Basically, we use it for creating only for one character, storing the one character only. So for example, like suppose pass or fail. So pass or fail result. Okay, pass or fail में result आना चाहिए, क्या आना चाहिए, P आना चाहिए
ये आना एफ आना चाहिए। सो पी स्टोर करना है, सिर्फ एफ स्टोर करना है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर करना पड़ेगा, ओके, रिजल्ट में। So in that case, so it is not required to create with different large number of characters size. So what happens if you created a character with a different size, for example character 10 दिया, so 10 characters define किया मैंने domain में, so mean unnecessarily we are wasting the memory, okay, that just it requires only one character. In that case you just use this data type. So character data type is used for storing one character information. And next character is next data type है where char. Suppose ऐसा नहीं है मेरे को multiple character store करना है, ठीक है, multiple characters store करना है, so इसके लिए where char है। so char को where char को difference क्या है? Suppose मैंने char में suppose 10 दिया, इधर में length है, ये length में मैंने 10 characters दिया। So what happens is when you define that character, that attribute by using the char in bracket 10, so 10 characters को जितना space लगता है वो space पहले ही create करके रखने वाले। Understand this? When you are created a data type using the char type and with defining the some length, if you define that length, so then that much size it will creates before using the attribute. अगर आप यूज करो ना यूज करो, उसका लेंथ सबसे मेमोरी क्रिएट करके रखता है मेमोरी में, ओके। सो सपोज मैंने 10 कैरेक्टर साइज दिया कैर में, एंड मैंने तो एक ही कैरेक्टर एंट्री कर रही, तो बाकी 9 कैरेक्टर्स का स्पेस, ओके, 9 कैरेक्टर का स्पेस वेस्ट ही हो रहा है ना, ओके। 1 बाइट में 8 बिट्स रहता है, 8 बिट्स मतलब पूरा 9 बिट्स में 1 बाइट में 9 बिट्स रहता है, सो उसमें पूरा के पूरा 9 बाइट्स डेटा वेस्ट हो रहे, ओके। सो दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ दिस कैरेक्टर, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन इज वेयर कैर, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर, सेम डेटा टाइप है, दोनों का सेम डेटा टाइप है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या डिफरेंस क्या है, ये इट इज वेरिएबल, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज स्टैटिक, दिस इज डायनामिक, ओके। सो हाउ इट इज डिफरेंट, फॉर एग्जांपल मैंने 10 किया, साइज 10 किया, सो 10 किया मतलब आई क्रिएटेड ए वेरिएबल विथ वेयर कैर 10 size. So what will happens if you given that? So until unless when you are enter some data into that variable, suppose if I entered 5 characters, then what will happens? Only 5 characters size will creates in the memory. Understand? Suppose if I created a data type using varchar data type, so and size is 10 characters length, and suppose if I stored just stored 5 characters in that particular variable, so what will happen? Only 5 characters size will creates, remaining 5 character size will not creates. But whereas in this character data type, even though you are using 5 characters, but it will create for the entire, it will uses, okay, it will reserve the space for 10 characters, okay. So that is the difference between the character and when where character, variable character. So you have to know this in the IT company interviews time में भी यही क्वेश्चन पूछना है, what is the varchar data type, what is the use of this varchar data type, what is the difference between general character and varchar, ये कंपलसरी आपको पूछने वाले हैं। सो ये डिफरेंस है, कैरेक्टर में फिक्स्ड साइज रहता है, अगर मैं कितना भी आप यूज करेगा तो भी उसमें उतना मेमोरी क्रिएट होता है, बट वेरकार में ऐसा नहीं है, आप इवन आप सो साइज 10 दिया, सपोज इवन 1 कैरेक्टर यूज किया तो सिर्फ 1 कैरेक्टर को मेमोरी क्रिएट होता है, एंड सम डाउट्स है ऐसे भी रहता है सबको। सपोज मैंने 10 साइज दिया, बट सपोज 11 कैरेक्टर्स एंट्री कर रहे, तो वेरिएबल कैरेक्टर है तो बोला है
बट वेरिएबल होना चाहिए ना, सो इससे नहीं होता है. सो दिस लेंथ इज मैक्सिमम. ओके, मैक्सिमम साइज हम जैसे जितना दिया उतना कैरेक्टर्स क्रिएट होता है. ओके, अंडरस्टैंड द डिफरेंस. वेरिएबल कैरेक्टर मीन्स वेरिएबल लेंथ क्रिएट होता है नहीं डायनेमिकली जितना उतना. ओके, डिफरेंस क्या है? तो ये मैक्सिमम लेंथ है. सपोज मैंने 20 दिया, 20 से आगे कैरेक्टर्स क्रिएट होता नहीं. ओके, 25 कैरेक्टर्स नहीं होता अगर आप 20 डिसाइड किया तो. ओके, सो दैट इज द वेरिएबल. इसके इस 20 में अगर साइज 20 दिया, 20 में सपोज आप 2 कैरेक्टर्स डेटा एंट्री किया तो सिर्फ 2 कैरेक्टर मेमोरी क्रिएट होता है. आगे 20 में अगर सपोज 10 कैरेक्टर का डेटा दिया तो 10 कैरेक्टर का मेमोरी क्रिएट होता है. Like this, the length is variables within the limit only. This limit is the length what we define in this brackets. Okay. So this is the two data types. You just always we use these two data types only, and most of the cases we use only this variable varchar data type only. Okay. Next, tiny integer. Okay, tiny text. Tiny text also be it is used for just a small type of uh, text messages के लिए. Okay, so tiny integer this is used for just a small size of text के लिए, and the text it is used for some up to 65. So 535 65,536 कैरेक्टर्स डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. ओके, लाइक वन पैराग्राफ डेटा हम स्टोर करना है. ओके, इसमें इस डेटा टाइप में एक पैराग्राफ हम स्टोर कर सकते हैं. एंड सम नेक्स्ट टेक्स्ट के लिए अलग है और मीडियम टेक्स्ट है. मीडियम टेक्स्ट में सो इसमें और थोड़ा एक पेज का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं. पेज में जितना कैरेक्टर्स रहता है उतना कैरेक्टर्स हम क्रिएट कर सकते हैं. इसमें कितना दिया? ऑलमोस्ट 1,67,77,215 कैरेक्टर्स लेंथ हम स्टोर कर सकते हैं. ओके, so almost so some small size file also we can store in this. And next to data type है long text. ये थोड़ा और बड़ा है. सपोज आपने तो बहुत बड़ा फाइल स्टोर करना, टेक्स्ट फाइल ज्यादा बड़ा वाला स्टोर करना है तो हम ये डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं. ओके, this is the size of this. Okay, characters, this much characters it can store. Okay, so almost it is so more than 40 million. Okay. Okay, and next this is text related data types. Character is one data type, varchar in another data type. Next, tiny text and medium text and the long text. Okay, next data type है integer data type. These are the text data types. Now we go for the integer data type. So integer data type में first simple integer है. ये देखो, this is simple integer. So इस simple integer में इसका साइज क्या है? 4 बाइट्स मेमोरी क्रिएट होता है. 4 बाइट्स में जितना हम डेटा स्टोर कर सकते हैं उतना हम स्टोर कर सकते हैं. Okay, sorry. This is integer डेटा टाइप. ओके, इंटीजर वेरिएबल अगर हमने क्रिएट किया तो उस वेरिएबल में हम कितना साइज स्टोर कर सकते हैं? 4 बाइट्स तक स्टोर कर सकते हैं. 4 बाइट्स में हम जो मैक्सिमम नंबर स्टोर कर सकते हैं उतना हम स्टोर कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज इंटीजर. नेक्स्ट इंटीजर में again it contains some variations like tiny integer. Suppose if you want to store only 1 byte of numbers. Okay, integers में सिर्फ small size integers में हम store करना है, उसके लिए ये data type हम create कर रहे हैं. Okay, and also next data type है small integer. ये tiny हो गया, ये small हो गया. Small में 2 bytes. Okay, 2 bytes of memory अगर हमको चाहिए. ओके, सो सिर्फ 2 बाइट्स से ज्यादा हम लेना ही ले सकते हैं तो हम ये डेटा टाइप प्रेफर कर सकते हैं, स्मॉल इंटीजर डेटा टाइप.
And suppose if it is up to, suppose if you want to store 3 bytes of information, so then we can prefer this medium integer. Okay, so this is the integer variations. And suppose if you want to store some more bigger number, okay, up to like 8 bytes, okay, size, so then this particular data type we can use. Okay, the data type is big integer, big integer. And suppose if you want to store not only integer, suppose if you want to store the floating point variables, floating point values, if you want to store, then float data type is also given. Float data type, it will take 4 bytes. Okay, and next float data type में again if you want to store the more big number, some more big number, then 8 bytes store कर सकता है. इसके लिए डबल डेटा टाइप देना पड़ता है वेरिएबल को. Okay, so double, it is a data type which is takes up to 8 bytes memory. Okay, we can store maximum only 8 bytes. Okay, so 0 bytes to 8 bytes हम store कर सकते हैं. And next decimal. Decimal भी same, it is a variable length of integer, and we can define that how many decimal. Actually it contains the two parts. Okay, point रहता है, decimal को point रहता है, point का पहले integer होता है, point के बाद float values रहते हैं. Okay, so point का पहले डिजिट्स कितना चाहिए वो हम इधर डिफाइन करना पड़ता है. so 2 parameters it takes. Just basically decimal, it contains 2 parameters, so like one length and decimals, how many decimals you require after the dot. For example, if it is a amount, suppose it is a related to the some financial related variables, if you want to store like the amount store करना है, amount always it contains only 2 decimals after the point. Okay, so that's why in that case only 2 points we need required to store. Okay, remaining points हमको नहीं चाहिए. So in that case we define that variable as decimal and with the length. Okay, so some length up to this much. Okay, and after that decimals, suppose 2 decimals चाहिए तो 2 decimals, 3 decimals चाहिए तो 3 decimals, 4 decimals चाहिए तो 4 decimals after the so point. So like this the decimal data type is also be used basically so for the so numbers creating. And this is the numbers related, integer related data types and float related data types. Okay, and some so length is given. Okay, so decimal also be given some. Okay, two type of decimal so it contains parameters decimal में length decimal points. So that's the floating point and integer type of data types. Now we go for the next different data types, that is called the date. Date is another data type basically used for storing the dates only, because databases में in some most of the databases it compulsory contains to store the dates on the particular column. For example, if you want to know the student enrolled date, so date should be stored in that column. Suppose the date of birth of the student, so it should contains the date also. And suppose the exam schedule करना है, so that schedule also it contains the dates. So just for if you take general student database, it contains importance for the date. So that's why डेट कंपल्सरी इसके लिए अलग एक डेटा टाइप क्रिएट करना पड़ता है. अदरवाइज if you are not created a data type of specially for dates, what will happens is when you are comparing the dates, so it will get some problem. Okay, suppose if you want to find some range, okay, इस डेट से इस डेट तक कितना दिन है वो कैलकुलेट करने के लिए भी मुश्किल होता है. Okay, so these are the some basic technical problems are there with dates. That's why the MySQL and as well as the Oracle in the SQL itself, language itself, they specified the a specific one data type is assigned for storing the data type. So when a variable is defined the date, then what will happens is that variable it can hold the date format. Okay, डेट फॉर्मेट में स्टोर होता है. ये फॉर्मेट है डेट स्टोर करने के लिए. पहले ईयर रहता है, इसके बाद डैश मंथ रहता है, डैश डेट रहता है.
Okay, so in this format the date will be stores in the system. Okay, and it will take 3 bytes. Okay, 3 bytes लेता है. So this is for date. And sometimes we can also need to store the time in the system. So time को भी store करना पड़ता है. Time को कैसे store कर सकता है? Okay, again time मतलब कैसे, suppose आपका कौन सा टाइम है, तो ये एनरोल किया, ऑर्डर दिया, फॉर एग्जांपल आप एक आइटम आप परचेज कर रहे तो हम आप कौन सा टाइम में ऑर्डर किया, टाइम पता होना चाहिए. एंड वी नीड टू सपोज लॉग इन इनटू द सिस्टम एनी यूजर, सो वो यूजर कौन सा टाइम में लॉग इन किया है वो पता होना चाहिए. सो सपोज इफ एनी स्टूडेंट और मे बी इफ एनी पर्सन ही डन एनी ट्रांसैक्शंस, सपोज अमाउंट तो डिडक्ट किया है. ओके, द बैंक एटीएम से डिडक्ट किया, सो कौन सा टाइम में ये डिडक्ट किया, वो टाइम इज आल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट along with the date. So in that case, so along with the date, one data type is there, the date time. So it will take 8 bytes. So in this format, the first is it contains the date, and after that it contains the space, and after it follows the time. Time it contains again 3 partitions. One is first is hours, next minutes and seconds. इस format में okay date and time store होने वाले. Okay, so this is the date time data type. Next data type is timestamp data type. Timestamp data type is basically, it is also similar to this date data type, but the difference is, so it will not contain the any dash symbols. Okay, ये year का month के बीच में dash symbol है. If you observe this, okay, if you observe the y and m बीच में क्या है, डैश है. ओके, वो डैश निकालने वाले. ओके, निकाल के इधर पूरा के पूरा वैल्यू मिलता है. ओके, एक आईडी, we can say it is an id. Okay, so id, unique id, it is also a unique id because इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर आवर, इस पर्टिकुलर मिनट्स, इस पर्टिकुलर सेकंड्स में वो एक्चुअली एक आईडी क्रिएट होता है इस वैल्यूज से. सो दैट आईडी इट इज ऑलवेज यूनिक. ओके, हर सेकंड में एक एक आईडी क्रिएट होता है ना. सो एक ही सेकंड, इधर सेकंड के चेंज हो गया तो ऑटोमेटिक नया आईडी क्रिएट होता है. ओके, दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी सेकंड new IDs will generate. So if you want to know that ID, if you want to create any that is called the timestamp. Timestamp means so a sequence of the, so unique value of that particular time. Okay, so that is called the so timestamp, and that year it is ends up to 2037. Okay, this is the timestamp. Once we created a variable for that, automatically we can able to store on that variable. Okay, in this format. Okay, जो भी है वो timestamp system का timestamp. Okay, इसमें store होने वाले उस variable में. Okay, this is called the timestamp, एक नया data type. Next time, सिर्फ time ही चाहिए. Suppose if you want to store only time. Okay, सो इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं. ओके, सो टाइम आल्सो बी देयर, एंड सम मोर डेटा टाइप्स आर देयर. एक्सप्रेशन स्टोर करने के लिए शॉर्ट ऑफ एन्यूमरेशंस. ओके, एन्यूमरेशन टाइप ऑफ वैल्यूज इफ यू वांट टू स्टोर दैट, देन वी कैन यू आल्सो यूज enum. Okay, so and set. So except some columns we can, okay, store the some positive values, several positive values. Okay, also we can use the set. Okay, set of values. Okay, so these are the some only data types which is basically used for the creating any table. Okay, by using these particular data types we can create a variables or we can create attributes in the table. First one is character, for storing the one character. Variable char for storing the variable length of characters, and tiny text, text, medium text, text store करने के लिए long text भी है. And next integer store करने के लिए tiny integer and small integer, medium integer, integer, big integer. ये से variations है integers data types में. And next floating variables,
फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करना है तो फ्लोट, डबल एंड डेसिमल, तीन टाइप ऑफ डेटा टाइप्स है फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करने के लिए। एंड डेट स्टोर करने के लिए अगेन फोर डेटा टाइप्स है, डेट टू डेटा टाइप है, टाइम डेटा टाइप है, एंड ऑल्सो इट कंटेन्स day to time data type, and also it contains a timestamp data type. Okay, so these are the data types which is required for creating any table. Okay, so now we go for next concept. It is actually today's just wait for few minutes. Just I want to share today's assignment. Just wait, it is loading. So now we seen that what are the different data types are there, and the data types which is required for the creating a table. Now we go for what is the integrity constraints. Okay, let us we see integrity constraints, list of integrity constraints. Basically, what is integrity constraint? What is integrity constraint? If anybody knows, please can you say what is integrity constraint? Anybody knows what is integrity constraints? What is a constraint? Anybody knows constraint का मतलब क्या है? Please Set of respond. rules. Yes, yes. Set of rules. Yes, correct. Yes. Anybody? Any other? Yes. Set of rules. Yes, it is absolutely it is correct. Okay. You see that this particular slide. Uh, Integrity constraint means set of rules. But ये rules किसके लिए किधर अप्लाई करना है? Okay. ये rules हम किधर रहता है? किधर हम ये rules अप्लाई करना पड़ता है? Just I will just explain general okay point of view. For example, मैंने मेरा डेटा स्टूडेंट डेटाबेस है, उसमें टेबल ऐसे मैंने क्रिएट किया है, स्टूडेंट नेम रहता है एंड रोल नंबर रहता है, एज रहता है. ओके, सपोज मैंने एक डेटा एंट्री कर रहा है इस टेबल में, स्टूडेंट नेम दिया, रोल नंबर दिया, बट आई एम एंटरिंग द एज एज -20. So is it actually is it correct? -20 in the age attribute, because the age attribute is defined as integer. Basically, if you define that attribute as integer attribute, so basically it will takes minus values also because the data type is integer. Okay, but it is not, it doesn't know it is एज एट्रीब्यूट, एंड एज को भी जीरो के पहले रहता है, मतलब जीरो से ज्यादा रहता है, और नहीं तो सम वैल्यू 18 ईयर्स ही रहता है स्टूडेंट को, नहीं तो 6 ईयर्स से मिनिमम रहता है फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड को ज्वाइन करने के लिए, ऐसे उसको पता भी नहीं चलता है. ऐसे अलग अलग कंडीशंस हम डालने के लिए नहीं है, सिर्फ हम इतना डिफाइन कर सकता है वेरिएबल को, either it is integer data type or maybe character data type, in tiny integer or long integer, ऐसे हम वही डिफाइन कर सकते हैं, बट ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते. ओके, इट्स लाइक एज शुड बी लेस देन greater than something values. Okay, so but this is not the case. Okay, but you should be give some additional condition. This is a one condition we are going to putting in the database. Okay, so this is means restricting the data, restricting the or conditions. We are applying some conditions. Condition अगर नहीं तो कोई भी अंदर आ सकता है. Suppose if event is conducting, if you don't have any restrictions, then anybody can enter into the event, can participate in the event. ओके, सपोज हमारा कॉलेज इवेंट ही चल रहा है, गैदरिंग. सो अगर आपको आईडी नहीं है,
तो आईडी कार्ड नहीं तो कोई भी एंटर नहीं कर सकता है. लाइक सम कंडीशन शुड बी देयर while entering some data into the database. Okay. So ऐसे हम जो भी जैसे डेटा हम बनाया वैसे डेटा एज इट इज डेटाबेस में नहीं भेज सकता है. It should contain some conditions. So once the conditions are satisfied, if the conditions are satisfied, then only the data will get into enter the database. So here क्या क्या conditions है. For example मैंने name दिया, name define किया, name में सिर्फ characters ही होना चाहिए. ओके. स्पेशल सिंबल्स में अगर यूज किया तो नेम में स्पेशल सिंबल किसी का भी नहीं रहता है. ओके. सो इन दैट केस इट कैनॉट एक्सेप्ट दैट. ओके. my database should not accept that characters in the name. And similarly age, my database should accept only age values more than 20 years or maybe more than 18 years. Suppose if any student want to enroll into the engineering courses, so she should contain so minimum age 18 or maybe 17 years. So like this, if you want to apply some conditions, if you want to create any conditions on the database, so we can have it through the integrity constraints concept. Understand? Integrity constraints means when you are integrating some new data into the database, integrating the new data into the existing database, so it should follow some conditions. Otherwise, we, we cannot able to integrate the data into the database. So that type of constraints are nothing but conditions. If you can apply on the database, so it will database it contained in the consistent state. Otherwise, it cannot contain in the consistent state. Okay. So अगर एज 0 है तो ऐसे डेटा कंसिस्टेंट डेटा होता है क्या? नहीं होता है. सपोज एक नेम है, नेम में क्या किया, जस्ट 1 2 3 4 5 डाला है, नहीं तो सिंबल्स कुछ तो डाला है. कंसिस्टेंट डेटाबेस होता है क्या? इट इज नॉट कंसिस्टेंट डेटाबेस. ओके. करेक्ट डेटाबेस नहीं होता है. सो इसलिए उसको कंपल्सरी हम कंसिस्टेंट करने के लिए, कंसिस्टेंट डेटा मेंटेन करने के लिए कंपल्सरी constraints apply करना पड़ता है. So here what type of constraints are we can apply on the database? Now I think everybody understand the general concept of what is constraints, integrity constraints. Now we go for actual technical constraints हम लगा सकता है. Okay. Now we see that constraints one by one. So first constraint is, you see that the categories of the constraint here defined like 4 categories are given. First constraint है domain constraint है. Okay. First constraint है domain constraint. What is this domain constraint? So domain means, I already told that when we are creating a variable, when you are creating a variable, so variable should contain a domain. Definitely it should contain a domain. Otherwise variable we cannot able to create that variable. So okay. So if you want to create a variable, or if you want to create a column, or if you want to create any attribute, okay, both in are same. So it should contain a domain. Okay. Suppose if I created a variable like roll number as the domain is integer. So means that variable integer, it can accept the values only integer type of values. Okay. We are restricting, we are making the condition. Condition क्या है इधर? रोल नंबर वेरिएबल है, ये वेरिएबल ये सिर्फ नंबर से एक्सेप्ट करना है इसमें. सो इसके लिए मैंने क्या किया, डोमेन इंटीजर असाइन किया. Okay, so that it can accept only integers, it cannot accept the characters. Okay, like this we are applying some conditions at a domain point of view. Domain point of view में हम ऐसे हम conditions लगा सकता है. Okay, so this type of conditions if you are applying by using the domains, then it is called the domain constraints. Domain constraints. So like for example, you see that definition. Domain constraints can be defined as a definition of a valid set of values of for an attribute. The data types of domain includes string, character, integer, time, date, currency, also some data types. Okay.
like this. Suppose if you see that age, it should contains only numbers. Or suppose name should contains characters, means this particular attribute, name attribute, it is restricted. So condition apply किया because condition क्या है, सिर्फ characters ही accept करना है इसमें name attribute में. So when you define this as a string or maybe the varchar, so it can accept only characters, not numbers or symbols, any others. Okay? So like this, the constraints what we are applying at variable domain by using domain, that particular constraint, we call it as a domain constraints. I think everybody understand what is domain constraints. Next, it is entity constraints. Okay, so entity integrity constraints. Okay, before we go for this, we go for the key constraints. Okay, entity constraint. Okay, we continue this entity constraint. The entity constraint means, suppose you see this table, employee ID, employee name and salary. इसमें so मैंने employee ID नहीं डाला है, चलता है क्या? Okay, can I enter the data without employee ID? Employee details में enter करना है. एक मेरा कंपनी है, कंपनी में एम्प्लॉयज डेटाबेस मेंटेन करना है मैं. So employee name enter किया, salary enter किया, but employee ID, without employee ID I can enter the name of the employee. Yes, it is not able to enter because in any organization employees के लिए एक यूनिक आईडी रहता है. एम्प्लॉय आईडी, उसको हम एम्प्लॉय आईडी बोलने वाले, यूनिक आईडी. So this unique ID, without unique ID we cannot able to enter his details into the database. So in this case employee ID is must. Okay, employee ID is must and should. Okay, so that's why this particular value should be there. So it should not be null. It should not be null. And similarly you see that name. Okay, employee ID एंट्री किया, अगर नेम एंट्री नहीं कर रही तो चलेगा क्या? नहीं चलता है. एम्प्लॉय आईडी क्रिएट किया है आपको, पर एम्प्लॉय नाम क्या है? ओके, एम्प्लॉय नेम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एम्प्लॉय? विदाउट एम्प्लॉय नेम वी कैन एंटर इनटू द डेटाबेस? नो. Even though if it is defined the domain of character, you should contain some name. Otherwise, without entering any name, it is not consistent database. But sometimes we can enter with null empty values also. For example, phone number. Okay, phone number सबको नहीं रहता है, किसी का भी नहीं रहता है, किसी का भी रहता है. In that case, that phone number it should be, it is optional. Okay, in that case it should be null. But in this attribute, if you see that एम्प्लॉय नेम, इसमें कंपल्सरी वैल्यू होना चाहिए. ओके, सो इट शुड बी कंटेन्स characters and also it should contain some value, anything, something value should be there. Okay, so means domain constraint defining that which domain the value it belongs to. And the next is entity integrity constraint is saying that entry करने के लिए compulsory value होना चाहिए. That is called the null values. Null is another type of integrity constraint. Null integrity constraint defines that particular column it should contains the value or it does not contains the value. It defines that. Okay, so can I enter the without value or can I compulsory want the value? ऐसे हम checking करने के लिए null integrity constraints रहता है. Okay, null integrity constraint. And this is a second constraint. Next is referential. Okay, before going to that referential integrity constraint, we go for the next key constraint. Very very important concept. Integrity constraint में key constraint है. Okay, let us see this same example. You see that employees information or maybe student, this is student information. Student ID है, roll number है, name है, okay, semester है, age है. So is it contains duplicate values in this roll number IDs? एक roll number आपको assign किया,
एक स्टूडेंट का रोल नंबर दूसरा स्टूडेंट नंबर रोल नंबर सेम होता है क्या? कभी भी बिल्कुल नहीं होता है। ओके, रोल नंबर इवन नेम सेम हो सकता है, नेम शुड कंटेन्स डुप्लीकेट, but roll number always should not contains duplicates. Okay, so it is also be one type of condition constraint. This is also one type of constraint. Unique values maintain करना है। Okay, unique values maintain करना है, this is also be a one type of constraint. Okay, so unique is a one constraint, and primary key also another constraint. Okay, unique is a one constraint which will maintain the unique values. Okay, unique values maintain करना है। सपोज मैंने डिफाइन किया आईडी को यूनिक, ओके, कंस्ट्रेंट डाला है, आईडी के ऊपर मैंने क्या डाला है? यूनिक कंस्ट्रेंट डाला है। यूनिक कंस्ट्रेंट अगर डाला तो क्या होता है? आईडीज में डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होता है। ओके, डुप्लीकेट एंट्रीज होता है नहीं। सो बट यूनिक का डिफरेंस क्या है? यूनिक का प्राइमरी की भी इट इज आल्सो भी सिमिलर। प्राइमरी की कभी यूनिक वैल्यूज एंट्री नहीं कर सकता। अगर सपोज मैंने आईडी को डिफाइन किया प्राइमरी की, ओके, प्राइमरी की मैंने इसको कंस्ट्रेंट डाला इसके ऊपर, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट डाला तो क्या होता है? इसमें यूनिक वैल्यूज मेंटेन होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं होता है। ओके, अंडरस्टैंड दिस, द टू कंस्ट्रेंट्स नाउ आई एम डिस्कसिंग, you see that one is primary key constraint, another is the unique constraint, but both are not same. But even the concept is saying that both should not contain duplicate, but both are not same. So unique constraint अगर suppose हमने उसको assign किया, यूनिक को क्या है डिफरेंस? यूनिक अगर ऐसा डिफाइन किया तो डुप्लीकेट वैल्यू से बिल्कुल एंट्री तो होता है नहीं, बट along the duplicate it removes the duplicate, but along that it also accept the null values. Okay, so very important point to remember this. Yes, along this यूनिक अगर सपोज मैंने आईडी को यूनिक डाला, यूनिक डाला तो क्या होता है? 100 accepted, 1001 accepted, 1002 accepted, 1003 accepted, but 1002 when I am entering it cannot accept, means because it is unique constraint इसमें है, इसलिए 1002 ऑलरेडी existed है ना, इसलिए ये रो एक्सेप्ट नहीं होता है। बट मैंने सपोज विदाउट दिस आईडी, ओके, मैंने आईडी रिमूव करके ब्लैंक रखा है, इसमें ब्लैंक रख के डेटा एंट्री किया तो होता है क्या? यूनिक कंस्ट्रेंट में ब्लैंक इन डेटा एंट्री होता है, ब्लैंक एंट्री होता है। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। आईडीज में सपोज मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट असाइन किया तो, कंस्ट्रेंट असाइन किया तो इसमें तो डुप्लीकेट तो एक्सेप्ट नहीं होता है, बट इसमें एम्प्टी वैल्यूज भी एक्सेप्ट करेगा, नल वैल्यूज एक्सेप्ट करता है। सो बट ऐसे सम केसेस में आईडीज रहता है तो आईडीज कंपल्सरी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ओके, बट हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? ओके, इसमें ब्लैंक नहीं होना के लिए क्या करना है? उसको यूनिक कंस्ट्रेंट असाइन करना पड़ता है, एंड यूनिक के साथ हम दूसरा कंस्ट्रेंट है नॉट नल कंस्ट्रेंट भी इसको असाइन करना पड़ता है। अंडरस्टैंड दिस? सो आईडी कंपल्सरी यूनिक आईडी मेंटेन करने के लिए एंड आईडीज में नल एक्सेप्ट नहीं करने के लिए हम क्या करना पड़ता है? दो कंस्ट्रेंट्स लगाना पड़ता है आईडी में और रोल नंबर्स में, रोल नंबर एट्रीब्यूट में दो कंस्ट्रेंट असाइन करना पड़ता है। पहले कंस्ट्रेंट क्या है? नॉट नल कंस्ट्रेंट, मींस इसमें रोल नंबर्स बिल्कुल एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ओके, कंपल्सरी कुछ तो कुछ एंट्री करना है, दैट इज नॉट नल। एंड सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है? यूनिक कंस्ट्रेंट, यूनिक मींस डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होना चाहिए। ओके, so these two constraints should be maintained, should be put on this attribute, id attribute. Okay, so now what is the primary key? Now we go to the primary key concept. Primary key is saying that it is just like a combination of both constraints
not null constraint and as well as unique constraint. Okay, ये दोनों मिलके एक नाम दिया है, that name it is called the primary key. Now you understand that primary key का है, primary key it is a constraint, but it is satisfying the both conditions of the unique and as well as null constraints. जो भी दोनों का constraints का condition satisfy कर रहा है primary key में. So instead of now giving the two constraints on the attribute, now I can give only one attribute, one constraint, that is primary key constraint. Okay, that's enough. Okay, so this is the advantage of the primary key. Primary key में हमका एडवांटेज क्या है? सपोज मैं इंस्टेड ऑफ assigning the two constraints like not null constraint and as well as a null unique constraint, now I want to give only primary key constraint. So primary key constraint अगर मैंने id को assign किया है, id को मैंने primary key assign किया, तो क्या होता है? primary key मतलब it should not contains null and also it should contain unique values. Okay, that is the primary key. I think everybody understand this, what is primary key. Okay, primary key matlab as a attribute or maybe set of attributes, we can make two attributes combinedly also. Okay, not only for one attribute, we can make the so more than on two attributes. Okay, दो attributes मिलके भी हम primary key बना सकते हैं. Okay, so दो attributes मिलके मतलब ये 1000 है, Tom है, 1000 Tom, इसमें सेम वैल्यू एंट्री नहीं होना चाहिए. इधर 1000 एंड टॉम दोनों सेम वैल्यू एंट्री नहीं होना चाहिए, बट 1000 रिपीट हो सकता है, बट विथ डिफरेंट नेम एंट्री कर सकता है, बट टॉम एंट्री कर सकता है विथ डिफरेंट आईडी. सो व्हेन वी आर मेकिंग द टू attributes as a primary key, then it will also so accept the so same unique values and compulsory not null. So this is called the primary key. Primary key is nothing but attribute or maybe set of attributes, attribute or maybe a set of attributes which maintains a unique values with not null, which maintains a unique values with not null. This is called the primary key concept. I think everybody understands this primary key. So now we go for the next reference integrity constraints. So we discuss this referential degree constraint afterwards because it is a foreign key constraint. So okay, so हम ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी टाइम खत्म हो गया. ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रहता है, रेफरेंशियल रिलेशनशिप क्या है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है. ओके, so it will contain some more discussion. So okay, so right now we are stopping this to here today itself. Actually next class है प्रैक्टिकल का, उस प्रैक्टिकल में हम कंटिन्यू करेंगे. ये अभी 3 बजे को फिर वापस है शायद, तो 3 बजे को हम सेम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या है एंड प्रैक्टिकली ये एक सब कंस्ट्रेंट्स कैसे हम दे सकता है हम देखेंगे. डेटा टाइप्स कैसे क्रिएट कर सकता है प्रैक्टिकली हम देखेंगे प्रैक्टिकल टाइम में. Okay, still right now if you anybody have the doubts, please ask the doubts so that I will be there for 5 minutes. You can ask the doubts like what is constraint, what is primary key, what is unique, what is not null. If you have any doubts, diploma students, you can also have some doubts in there. Okay, already you studied in your diploma, so but still some doubts you have, you can clarify your doubts. Okay, here itself. So you can just unmute yourself and you can ask right now. And don't forget to, all of you don't forget to take the screenshot. So and after that you just upload it into the Google Class. And practical is practical lecture है 3 बजे को, शायद आज practical 3 बजे को है. So again we will meet at 3 o'clock. If anybody have doubts right now, you can just ask, unmute yourself and ask the doubts so that I will clarify each and every one doubts regarding to the data types and the integrity constraints.
If you don't have the doubts, please you can leave the class itself.